बरतानिया में 4 जुलाई के आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी जारी है। मैनचेस्टर में लेबर पार्टी के उम्मीदवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल और फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी की हिमायत की है। पार्लियामेंट्री उम्मीदवारों का कहना था कि 4 जुलाई के इंतखाबात के बाद लेबर पार्टी बरतानिया में बड़ी तब्दीली ला रही है। बरतानवी आवाम के मसाइल, रोजगार और नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मायार को बेहतर बनाएंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। विदेशी बहन भाइयों की जरूरत थी, उनकी भी हम आवाज बने हैं और आइंदा भी किसी भी कोने से अगर हॉस्टाइल इमिग्रेशन पॉलिसी की आवाज आएगी तो हम उस पर आवाज बनेंगे इंशाल्लाह। फाइनल पॉइंट जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन होती है जो व्हाट्सएप पे भी चलती है। असल क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, ये सब मिक्सअप हो जाता है। हाँ, मैं अपने बहन भाइयों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये क्लियर रखें कि जो पोजीशन लेबर पार्टी इस वक्त है वह फलस्तीनियों के हक में है। ये क्लियर रखें कि पिछले 9 महीनों से जो जुल्म उन पे हो रहा है, तो बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो वो एक है, वो सिर्फ लेबर पार्टी का रेजोल्यूशन है इमीडिएट सीज फायर का, किसी और जमात का नहीं है। ये बहुत सी जो बातें बाहर होती हैं हकीकत से बहुत दूर है। तो ये क्लियर रखें इस पॉइंट पे और इसके मुताबिक ही 4 जुलाई को करें और वोट दें। और वोट, हमारा रिश्ता लेबर पार्टी के साथ बहुत पुराना है। अब वक्त ये है कि जब हुकूमत में आ रहे हैं तो हमारी आवाज इस हुकूमत के अंदर मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारी आवाज मजबूत नहीं होगी तो ये हम सब का नुकसान है। The Kashmir story is a tragedy that is as old as the Palestine story, and yet the eyes of the world have looked away for far too long. What we need is the United Nations resolutions to be upheld. And they are very simple resolutions that date from the end of the British Raj in India and the partition between the two new dominions that were created at independence of Pakistan and India. And that was to give the princely states, of which Jammu and Kashmir was one, the right to self-determination. They could join one or other of the new dominions set out in the Indian Independence Act, an act of the Westminster Parliament, or they could choose their own destiny. Now, it's not for me as a British politician to say whether Kashmir should be part of Pakistan, part of India, or a state in its own right. The only people who can make that decision are the Kashmiri people, and that's what I want to see us work towards. So the Labour Party policy that's in our National Policy Forum document that was agreed just a year ago is very clear. We want to see the United Nations resolutions upheld. We want to see all allegations of human rights abuses investigated and the perpetrators brought to account in the same way as we are calling for that in respect of Gaza. And then no decision should be taken about Kashmir without the Kashmiri people round the table. So we need to find a mechanism where we get India and Pakistan and the voice of the Kashmiri people around the table to get that plebiscite agreed. And then it's down to the Kashmiri population themselves. And that is what I want the next Labour government to work towards diplomatically. Again, using our status as a UN Permanent Security Council member, but also as a leading member of the Commonwealth. Because it's the one thing that brings the United Kingdom, Pakistan and India around the same table, and that is the three of us being important leading members of the Commonwealth of Nations. And we should use that role to finally solve this 75-year injustice for the Kashmiri people. You want to add anything? Like Andrew, I've been horrified by the scenes in Gaza, horrified as a parent, horrified as a human, and we need to do everything we can to support ceasefire. That's the position I've held for some time. And like Andrew says, we need to go further in fulfilling our role on the international stage to work towards an independent, flourishing and thriving Palestinian state as part of a two-state solution. And it should be a priority for a Labour government, if that is what we end up with on Friday the 5th of July, to play a leading role
in calling for that. In terms of the other challenges I face as a candidate, look, I've had hundreds and hundreds, thousands of conversations with people on the doorstep in Altrincham and Sale West, and almost universally people agree it's time for change. We have a government that is clapped out, tired after 14 long years in which they have left our international reputation in tatters, and years where they have divided our country and our communities. तो लेबर पार्टी इस पॉइंट में बिल्कुल क्लियर है कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी के बेस को हमने स्टेबलाइज करना है। हमने देखा है कि टोरी पार्टी के होते किस तरह शरह जो फीस सूद की है वो किस तरह बढ़ रही थी, जो इन्फ्लेशन था किस तरह बढ़ रही थी, तो ये सारी चीज़ों ने इम्पैक्ट किया हुआ है, तो हम उसको स्टेबलाइज करेंगे।